Good day everyone. Okay. But today we have met again to continue with our fourth lecture. In the previous video, we have done two application of dimension. We have done two application of dimension. Number one, the first application of dimension was to check the correctness of a given equation. How do we check the correctness? We were very clear. In every equation, there is something written on LHS, there is something written on RHS. What you can do is, you can find out the total dimension of LHS. You can find out the total dimension of RHS. And this dimension of LHS is equal to dimension of RHS. The given equation is dimensionally correct, and that principle is called as principle of homogeneity. Principle is called as principle of homogeneity. ये हमने बात किया था. ठीक है. After that, we further moved ahead to do the second application to derive relation between SI and CGS. SI is the higher system of units. CGS is the lower system of units. To derive relation between SI and CGS unit of any quantity. We did number of examples. We did force, we did work, we did pressure, we did density. Okay? These are some examples which we did. Now let's go ahead and talk about the third application. Very, very, very important. Third application of dimension. Okay? I will be going very slow for this, because this requires some calculation in a particular manner. जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको कैलकुलेशन करना है. जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको कैलकुलेशन करना है. So let us talk about the third application. That is to derive the physical form of any equation. To derive the physical form of any equation. इसका मतलब क्या? Now, physical form means nature of the given equation. सर नहीं समझ में आया, but obvious. एक simple सा example है. What is the formula of kinetic energy, which you know it very well? Kinetic energy का formula is half mv square. This is your exact equation. अगर मैं बोलूं physical form मतलब nature of the equation, so can I say kinetic energy is directly proportional to mv square. मतलब हमने कांस्टेंट को निकाल दिया. Because you will agree, dimension से हमको कांस्टेंट का वैल्यू नहीं मालूम पड़ता है. You don't get an idea about the value of constant from dimensions. For that, constant का value निकालने के लिए you have to do experiments. So, if I say E is proportional to mass raised to 1 v square, this is called as physical form. Means relation of one term with the other terms involved in the formula is called as physical form. Relation of one term with the other terms involved in the formula is called as physical form of a given equation. कल को अगर कोई आपको बोलता है energy depends on mass, energy depends on velocity, सिर्फ इतना ही मालूम, तो उसका nature of the equation कैसा रहेगा? mass न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, वेलोसिटी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, क्यूब है, क्या रिलेशन है, उस रिलेशन का फॉर्मेट, नेचर, कैसे दिखेगा वो रिलेशन, वो आपको यहाँ पे मालूम पड़ता है. सर इतना सब नहीं समझ में आ रहा है, बट ऑब्वियस ना. लेट अस टेक एन एग्जांपल. हम यही एग्जांपल लेते हैं. चलो, let us take this example only. Suppose someone says this to you, that kinetic energy E depends on mass and velocity.
किसी ने सिर्फ आपको इतना बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, फाइंड आउट द फिजिकल फॉर्म, फाइंड आउट द फिजिकल फॉर्म, वो इक्वेशन कैसे दिखेगा। मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया बिकॉज वी नो कि वो इक्वेशन एक्चुअली कैसे दिखता है। तो लेट अस सी कि हमको वो सेम चीज मिलता है कि नहीं, वो हम देखते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। Please, we will follow the same format everywhere. We will say, बोर्डो ने क्या बोला? Kinetic energy depends on mass, depends on velocity. There are how many variables on the right hand side? There are two variables. Two variables, A and B. A and B. I can say where A and B are unknown powers. अननोन पावर्स मतलब यही तो हमको वैल्यू निकालने का है, जो अननोन है उसी का वैल्यू निकालने का है। ओके, ए एंड बी, सपोज देयर वर थ्री टर्म्स, सो ए बी सी, आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, योर विश, पी क्यू आर भी लिख सकते हो, योर विश। मैंने ए और बी लिखा है यार, क्या फर्क पड़ता है। ओके, ठीक है ना। आफ्टर दिस आई कैन सी काइनेटिक एनर्जी, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाला तो आई विल गेट अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k, m raised to a, velocity raised to b. Proportionality sign निकाला. Can you convert this in terms of dimension? Dimension of E is dimension of m raised to a and b raised to b. Constant है ना? This is constant. Dimensions में constant का value का बारे में हमको मालूम नहीं पड़ता। तो आई कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा, न्यूमेरिकल कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा। सो नाउ वन बाय वन, इफ आई आस्क यू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमको यूनिट मालूम है, केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इफ आई कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, m1 l2 t minus 2, dimension of m raised to a, बेटा m is mass, m1 l0 t0 raised to a, final m raised to a l0 t0, dimension of velocity raised to b, पहले velocity is what, meter per second raised to b, don't forget the power, so power के साथ खेलेंगे तो m0 lv t minus b. This is equation number 3. अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। Substitute equation number 3 in equation number 2 and we get left hand side में equation number 2 को पहले लिखें। Energy is equal to mass raised to a and v raised to b. What is energy का dimension? m1 l2 t minus 2. Mass is ma l0 t0. Velocity का m0 lv t minus b. अपने मन से नहीं लिख रहा, ये जो है इसी को ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दिया। वापस बोल रहा हूँ, एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। तो क्या लिखा? एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। There are how many terms on the right hand side? 2 terms. So there are 2 unknown powers. If I remove this proportionality sign, I will get a constant of proportionality. Convert that in terms of dimension. फिर left hand side का dimension, right hand side का हर एक term का dimension निकाल. Substitute that equation number 3 in equation number 2. Now left hand side still the same. Left hand side still the same. Right hand side. M raised to a, m raised to 0. ये क्या हो गया? M raised to a. L 0 plus b is b. And t minus b. Can you see left hand side में mass, length, time, right hand side में mass, length, time. Can you simply now write comparing the powers? We get compare the power of n. When you compare the power of n, क्या मिला? A is equal to 1. Compare the power of length. So b is equal to how much? 2. For reference purpose, वापस माइनस बी इज माइनस 2, तो बी कितना हो गया? 2 ही मिला ना, कोई दिक्कत नहीं, एक ही स्टेप करने का जरूरत था, मैंने दोनों कर दिया। सो देखो ए एंड बी मिल गया। नाउ सब्स्टिट्यूट a is equal to 1, b is equal to 2 in equation number 1
and V get. What was equation number 1? Energy is proportional to m raised to a v raised to b. Both m v square. Isn't that kinetic energy is m v square? Isn't that your exact equation? Isn't it? Half m v square का exact equation था. यहाँ पे हमको half का value नहीं मिलता है. You don't get the value of half from the dimensions because for that you have to do experiments. For that you have to do experiments. So here we got the nature of the equation. Nature of the equation. What I am going to do right now, I'm going to rub it and I'm going to do it again with you. I'm going to do it again with you so that हमको flow समझ में आएगा. Flow समझ में आएगा. कैसे करना है? वापस एक बार करते हैं. Same step, so that we get into the groove of it. Okay. So that we understand it better. Then we will take other examples also. अभी तो ये simplest example है. Okay. We start with solution. Solution में क्या लेगा? It says it starts with energy depends on mass, depends on velocity. There are how many terms on the right hand side? 2. So if there are 2 terms, there are 2 powers, A and B. So I can write where A and B are unknown powers. A and B are unknown powers. Can you convert this? Can you remove the proportionate sign? E is equal to K, m raised to A, V raised to B. Can I convert this in terms of dimension? Dimension of E is dimension of m raised to A, dimension of V raised to B. ठीक है? Now what do we do? हर एक टर्म का हम डायमेंशन निकालते हैं. एनर्जी का डायमेंशन हम सभी को मालूम है. m1 l2 t minus 2. Mass raised to A, m1 l0 t0 raised to A. Final is what? ma l0 t0. Velocity raised to B. पहले velocity का डायमेंशन बोलो. Velocity का डायमेंशन l0 l1 t minus 1 raised to B. Then क्या मिला? m0 lb t minus b. We write this as equation number 3. Then what do we say? Substitute equation number 3 in equation number 2 and we get. What is that equation number 2? Equation number 2 is dimension of energy is dimension of m raised to A, dimension of V raised to B. Energy का dimension m1 l2 t minus 2. Mass का ma l0 t0. Velocity का m0 lb t minus b. After some time आप directly भी लिख सकते हो. अभी I am making you used to it ना, इसलिए ये सब steps लिख रहे हैं. Now left hand side still the same, कोई दिक्कत नहीं. Left hand side still the same. Right hand side m raised to A, lb and t minus b. left में भी mass, length, time और उसके powers. Right hand side में भी mass, length, time और उसके powers और बीच में equal to sign है. So can I simply write comparing the powers? Comparing the powers. What do we get? A is equal to how much? 1. B is equal to how much? 2. Simple comparison था ना बेटा. Now what do I say? Substitute. A is equal to 1. B is equal to 2 in equation number 1 and we get. What is equation number 1? Energy is directly proportional to. So energy is proportional to m1v, isn't it? Kinetic energy is mv square. Exact equation क्या आता है kinetic energy का? Half mv square. आपको ये half नहीं मिला. Why? Because for calculating the constant you have to do experiments. This is called as ये exact equation था and this is called as the physical form. Nature of the equation. वो equation कैसे दिखेगा ये आपको डायमेंशन से मालूम पड़ता है. ये आपको डायमेंशन से मालूम पड़ता है. दैट वाज योर फर्स्ट एग्जांपल. ओके, चलो बेटा कुछ और एग्जांपल देते हैं. कुछ और टर्म्स का. इधर 2 टर्म था ना, 3 टर्म 4 टर्म लेके करते हैं. चलो लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल्स. Okay. Second example I would say, imagine a force F
acting on a particle, performing force F, acting on a particle performing circular motion, depends on mass m, velocity v, and radius r. इतना ही है. Force depends on mass, velocity, and radius. You are asked to find out the physical form of the equation. Let us start. क्या बोला? Force depends on mass, velocity, and radius. How many terms are there? There are how many terms? There are 3 terms. If there are 3 terms, how many variables will come? A, B, C. Okay? Where? What is A, B, and C? A, B, and C are unknown powers. They are unknown powers. मतलब यही वैल्यू मेरे को निकालना है. If I remove the proportional sign, I will get a constant. M raised to A, V raised to B, R raised to C. Can I convert this in terms of dimension? Dimension of force, dimension of mass raised to A, dimension of velocity raised to B, and dimension of R raised to C. Okay? हो गया. Now let us find out dimension of each and every term. Dimension of force. Force का dimension m1, l1, c minus 2. कोई दिक्कत नहीं. Dimension of m raised to a. Mass का dimension बोल. mass का dimension raised to a. Finally क्या है? ma, l0, t0. Velocity raised to b. पहले velocity का dimension लिखो. Velocity का dimension m0 l1 t minus 1 raised to b is m0 lb t minus b. Then radius is the type of distance. So m0 l1 t0. Final m0 lc t0. We call this as equation number 3. हम क्या करते हैं? Equation number 3 को 2 में डालते हैं. So we say substitute equation number 3 in equation number 2 and we get what is that? हमने क्या बोला? F is m raised to a, v raised to b, and r raised to c. चलो, force का dimension हम सभी को मालूम है. m1, l1, t minus 2. Mass raised to a, ma, l0, t0. Velocity raised to b, m0, lb, t minus b. Radius m0, lc, t0. Left hand side m1, l1, t minus 2. Right hand side a, 0, 0. So it is m raised to a. L, 0, b, c. तो क्या हो गया? b plus c. T, 0 minus b, 0. So it is t minus b. Now left hand side पे कौन है? Mass, length, time और उसके powers. Right hand side पे कौन है? Mass, length, time और उसके powers. So can I now write comparing the powers? We get by simple comparison. A कितना हो गया बेटा? 1. L को जब तू कंपेयर करेगा, L के बाद कितना अननोन है? 2 अननोन है. सर नहीं मिलेगा. तो पहले टाइम का कर लो. So what is that? Minus b is minus 2. So b कितना हो गया? 2. अच्छा. Then what is that? b plus c is how much? b plus c will be 1. लेकिन b का वैल्यू मालूम है देखो. 2 plus c is 1. So c is how much? Minus 1. a, b, c का वैल्यू मिल गया. Substitute. a is equal 1, b is equal 2, and c is minus 1. In equation number 1, we get f is proportional to m raised to a, v raised to b, and r raised to c. था जल्दी बोल. It is m raised to 1 v square r minus 1. It is m v square by r. m v square by r. बेटा एक बात बोल. Anything अगर इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब 0 होता है. क्या हो? अगर कुछ लिखा नहीं है मतलब इट पावर इज 1 ना. तो यहाँ पे मास रेज टू कुछ नहीं लिखा है. इट इज मास रेज टू 1.
r रेज टू -1 जब नीचे जाएगा तो 1 हो जाएगा ना. सो व्हाट इज द फिजिकल फॉर्म? mv स्क्वायर बाय r. mv स्क्वायर बाय r. दैट इज योर थिंग. हमने वही किया, इक्वेशन नंबर 1 लिखा पहले फ्रॉम द डेटा, फिर प्रोपोर्शन टाइम निकाला, इक्वेशन नंबर 2, डायमेंशन में कन्वर्ट किया, इक्वेशन नंबर 3, हर एक टर्म का डायमेंशन निकाला, हर एक टर्म का डायमेंशन निकाला. ओके, ये ना नेक्स्ट को इसको बोलते हैं ना. हाँ, हर एक टर्म का डायमेंशन निकाला 3, देन सब्स्टिट्यूट 3 इन 2, फिर 2 लिखा, फिर हर एक टर्म का डायमेंशन निकाला, सिंपलीफाई किया. लेफ्ट में मास, लेंथ, टाइम और उसका पावर, राइट हैंड साइड पे मास, लेंथ, टाइम एंड पावर. फिर कंपेयर द पावर्स एंड गेट द वैल्यू ऑफ एवरी वेरिएबल एंड सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1. ओके, चलो थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं. हम थोड़ा सा टफ वाला एग्जांपल लेते हैं. थोड़ा सा टफ वाला एग्जांपल लेते हैं. टफ वाला लेते हैं. ओके, थोड़ा सा टफ वाला सोचो. चलो, आई विल से टाइम पीरियड कैपिटल T of a simple pendulum. Time period of a simple pendulum depends on length L and acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is a type of acceleration only. तो उसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट क्या रहेगा बताओ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हम लोग लिखते हैं ना 9.8 बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही है. सुना, ये हमारा क्वेश्चन था. टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो आई विल से टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, चलो. अच्छा, एक बात और समझ लीजिए. n1 v स्क्वायर, अभी इसके पहले वाला, एनीथिंग व्हिच इज रेज टू -1 मतलब वो नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा ना बेटा, ऐसा हो गया, राइट? सो दैट इज देयर. तो ये समझ में आ गया ना, -1 अगर -1 है मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. प्लस अगर पावर प्लस है मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. पावर ऐसा माइनस में आया, ओके, मीन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये हम सभी को मालूम है. ओके, तो उसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे. चलो, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड g. हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 2 variables. So yes, 2 variables. So there will be 2 powers also, a and b, where a and b are unknown powers. A and b are unknown powers. Unknown powers. What is capital D equal to k? L raised to a and g raised to b. हमने क्या किया? Proportional time निकाल दिया. Then can I convert this in terms of dimension? Dimension of t will be dimension of L raised to a, g raised to b. मैंने किसको नहीं लिया? किसको नहीं लिया? Constant को नहीं लिया, because constant has no dimension. Numerical constant has no dimension. Now, one by one. What is the dimension of time? L0 t 1. Length raised to a. Length raised to a. L0 t0 raised to a. That is M0 LA t0. Okay. Then, if I ask you dimension of g मतलब acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. मानता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Length raised to 30 raised to -2 is equal to, जल्दी बोल, m0 lb t -2. We call this as equation number 3. हम equation number 3 के साथ क्या करते हैं? We substitute equation number 3 in equation number 2 and we get, what is equation number 2? T is L raised to a and g raised to b. Time का dimension m0 l0 t 1.
लेंथ का m0 LA T0, g का m0 LB T minus 2. ओके ना, लेफ्ट हैंड साइड अभी भी सेम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वापस लिखने में. राइट हैंड साइड पे m0 m0 मतलब m अभी भी 0, length A and B, so it is length A plus B and time with minus 2t, so minus 2t. Now can I simply comparing the powers, we get m का पावर कंपेयर करके कुछ नहीं मिलेगा, लेंथ का सिर्फ दो वेरिएबल है, रुक जा, टाइम का -2b is 1, so b is how much, -half, b is -half. अभी लेंथ का ले, a plus b was 0, a b का वैल्यू कितना है -half, so what is a बेटा, half, a भी half, b भी half, so now substitute a is equal to half, b is equal to -half in equation number 1, and we will get, what is equation number 1? It is equation number 1 was t is proportional to l raised to a g raised to b. अभी देख, t is l raised to half g raised to -half. बेटा अगर पावर हाफ है मतलब स्क्वायर रूट में आया कि नहीं, स्क्वायर रूट में आया कि नहीं, so t is proportional to root of l by g. T is proportional to root of L by G. That is your physical form. हमने तो वही काम किया था, पहले from the data equation number 1 लिखा, proportion साइन को निकाला, फिर dimension of every term फाइंड आउट किया, इक्वेशन नंबर 3 को 2 में डाला, सिंपलीफाई करके पावर का वैल्यू निकाल दिया. देख कुछ नया नहीं कर रहा, वही स्टेप को मैं बार बार कर रहा हूं. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ question number 4, I will take one more example. After that I will give you two examples which I want you to try at your place. Okay, and let me know the answer for it. Okay, question number 4, चलो ऐसे velocity v of a freely falling body depends on acceleration due to gravity g and height, that is h. At velocity of a freely fall, अगर किसी बॉडी को हमने ऊपर से नीचे छोड़ा, जब वो नीचे आ रहा है तो उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा. तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना है हमको नहीं मालूम. इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट, ऐसा आपको बोल दिया. नाउ वी हैव टू स्टार्ट. वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन g and h. हाउ मेनी वेरिएबल्स? 2. सो देयर आर 2 अननोन पावर्स वेयर a and b are unknown powers. A and B are unknown powers. Can I remove the proportional sign? Can I convert this in terms of dimensions? That is g raised to a and h raised to. ठीक है ना. अभी हम क्या करेंगे, हर एक टर्म का डायमेंशन निकालेंगे. डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी m0 l1 t minus 1. G raised to a, acceleration raised to b. Acceleration is m0 l1 t minus 2. कितना हो गया ये? m0 नहीं raised to a है ना, सॉरी, m0 la t minus 2a. And then height is the type of distance. That is m0 lb t. Equation number 3. If I say substitute equation number 3 in equation number 2, we get equation number 2 क्या था? Dimension of velocity, dimension of g raised to a and h raised to b. Left hand side m0 l1 t minus 1. First term m0 la t minus 2a.
हमने लिखा है, अपने मन से कुछ नहीं बोला। और फिर h हाइट रेज टू बी m0 lb t0, लेफ्ट हैंड साइड m0 l1 t minus 1, राइट हैंड साइड m 0 आएगा 0, l का पावर बेटा a प्लस b, t का पावर -2a ना। कैन यू कंपेयर द पावर ऑफ n? सर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कंपेयरिंग द पावर we get, okay, if I compare the power of length, sir दो वेरिएबल, can I compare the power of time? -2a is -1, माइनस साइन गया, so what is a equal to half, a equal to half। वैसे power of length, so a plus b is how much? 1, a का वैल्यू half plus b is 1, so what is b equal to? 1 minus half is half, 1 minus half is half, so now substitute a is equal to half, b is equal to half in equation number 1, and we get, what is equation number 1? V is directly proportional to g raised to a and h raised to b, so v is proportional to g raised to half, h raised to half, मतलब v is proportional to root of gh। दोनों पावर पॉजिटिव था ना बेटा, दोनों पावर पॉजिटिव है, मतलब बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द square root of, okay, that is question number 4। question number 4 okay, same चीज इक्वेशन बनाया, then I remove this proportion inside, okay, write it in terms of dimension for equation number 2, find the dimension of every term, equation number 3, substitute 3 in 2 and simplify that, compare the power of mass, length and time, get the unknown powers and then write it in equation number 1, write it in equation number 1, okay, that is question number 4 बेटा। question number 4, okay, let me take एक चलो एक टफ वाला लेगा, let me take one टफ वाला क्वेश्चन, एक बहुत टफ वाला क्वेश्चन लेगा, वो आ गया तो सब आ गया, बहुत टफ वाला लेते हैं। फ्रीक्वेंसी smallest, frequency of vibration of a string depends on tension t मतलब हरदम टाइम पीरियड नहीं होता है, यहाँ पे tension is also denoted by t, tension which is a type of force, okay, tension in the string, okay, पहले ऐसे लिखना, depends on length of the string, capital L, depends on tension of the string which is a type of force, tension is a type of force denoted by the letter capital T, and linear mass density means it is mass upon length denoted by the letter mu, okay, must question, okay, frequency depends on these three terms and you have to find out the physical form, so frequency depends on length, tension and mu, कितना वेरिएबल है? 1 2 3, so I will say A B C, where A B and C are unknown powers, okay, so F is equal to K times L raised to A, T raised to B, mu raised to C. Can I convert this in terms of dimension of frequency, dimension of length, dimension of force raised to B and mu raised to C, equation number 2. Now one by one, what is dimension of frequency? M0 L0
t minus 1, reciprocal of sine theta. Length raised to a, length raised to a, it is m0 l1 t0. कितना हो गया? m0 la t0. Then I am saying tension raised to b. Tension मतलब a type of force है, force. It is m1 l1 t minus 2. It is mb lb t minus 2. And linear mass density is mass upon length. Mass upon length. m1 l minus 1 t2. It is m raised to c t minus c next l minus c and t. I will write this as equation number 3. अब हम क्या करते हैं? Substitute equation number 3 in equation number 2 and we get, what is equation number 2? It says frequency, dimension of frequency, dimension of L raised to A, tension raised to B and mu raised to C. One by one, left hand side. M0 L0 T minus 1. First term, M0 LA T0. This is N B T B and this is minus 2B kg meter per second square. And linear mass density is M raised to C L minus C T0. अपने मन से नहीं लिखा, जो भी इधर इक्वेशन नंबर 3 में लिखा है इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल दिया ना. लेफ्ट हैंड साइड स्टिल द सेम, कोई दिक्कत नहीं. राइट हैंड साइड टेल मी m0 b c, तो क्या हो गया? m raised to b plus c. L, it is a plus b minus c and t 0 minus 2b and 0. ये हो गया. Now can I say comparing the powers? We get. Can you compare the power of mass first? नहीं sir, दो unknown है, नहीं मिलेगा. Can you compare the power of length? नहीं sir, तीन unknown है, नहीं मिलेगा. Can you compare the power of time? Yes sir, एक unknown है. Minus 2b is minus 1. So b is how much? Half. Now can you compare the power of mass? Yes sir. b plus c is 0. b का value half plus c is 0. So c is how much? Minus half. Now can you compare the power of length? Yes sir. a plus b minus c is equal to 0. a कितना है? मालूम नहीं. b कितना है? b is half. c कितना था? minus half. देखिएगा इधर मिस्टेक होएगा. माइनस इंटू ब्रैकेट माइनस हाफ इज इक्वल टू 0. So what is this? a plus half is equal to 0. So isn't that a plus 1 is 0? So a is how much beta? Minus 1. So now what do I do? Substitute. a is equal to minus 1, b is equal to half and c is minus half in equation number 1. And we get, what is equation number 1? F is proportional to L raised to A, G raised to B and mu raised to C. So F is proportional to, I'm just writing it over here. F is proportional to L raised to 1, G raised to half and mu raised to minus half. So F is, L is minus 1, na? F is 1 by L root of, ये tension है. Equation number 1 was T, okay. It is T by mu. So F is proportional to 1 by L under root of T by mu. That is your equation number. That is this physical form of this equation. Physical form. जब तक आप practice नहीं करोगे आपको नहीं आएगा. Okay. Let me give you one example which you will be doing it and you will be letting me know the answer for it. और उसका आंसर आप मुझे बताओगे. Okay. Velocity of sound
Velocity of sound is velocity ना, क्या फर्क पड़ता है? Velocity of sound depends on pressure and density. ये velocity of sound depends on pressure and density. और इसका आप निकालोगे. I will just give you the answer for it also, so you know that whether you are right or not. V is proportional to under root of P by rho. का मतलब A का वैल्यू हाफ आएगा, B का वैल्यू माइनस हाफ आएगा. ये आंसर आपका आना चाहिए. Okay, try doing this, guys. Okay, this completes our lecture number 4 beta. Now after this, when we meet in our next lecture, we are going to solve MCQs. We will solve MCQs और देखेंगे जो भी हमने पढ़ा है उसको हम MCQs में कैसे यूज करते हैं. This is what we guys are going to see it when we meet in our next lecture. Okay, I hope this is clear. For this you have to have patience. जरा धीरे-धीरे देखो. एक example देखो. Go back, see the same example. Example number 2, go back and see. Example number 3, देखो, pause और please खुद से करो. 4, देखो, pause खुद से करो. 5, देखो, pause खुद से करो. 6, खुद से करो. If you do this, you are done with everything. That's all from me, my friends. Thanks a lot, guys. Take care. पढ़ते रहो.